Now, beta, we will do some questions related to the chapter cell. Okay, just answer me one by one. Okay, otherwise I won't be able to understand what you guys are going to tell. Now, very first is Anshu. You have to tell me whether the statement is true or it's false. Okay, beta. So, viruses are non-cellular living organisms. True. Okay, they are non-cellular living organism. Everyone agrees. Ma'am, true. Yes, ma'am. True. Okay, great. Chaliye. Okay, fine. Next is beta, amoeba is a multicellular organism. Next one is Prithvi. Yes, amoeba is a multicellular organism. Yes, ma'am. True, ma'am. True. True. Yes, Anshu? नहीं मैम false false. Ma'am, false है, false. False. false Yes. है मैम false है. Yes. Parth. Plant cells are bounded by a wall composed of cellulose. True. True. Yes. Bhavya, now it's your turn, beta. Cellulose is a protein. Bhavya, Yes, ma'am. cellulose is a protein. Is it true or false? And दो मैम ये बात बोल रहा and ये prediction दिए थे Sorry, fourth question it's fourth. question is there Fourth, beta, fourth. and false False. Yes. Cellulose जो होता है ना बेटा, it's a carbohydrate. It's not protein. Clear? Now, आशी बेटा आप बताएंगे. Plasma membrane is present in all cells. Is it true or false? True. True. Yes. Very good. Now the next turn comes out to Anshu. Blue-green algae have prokaryotic cells. False. Is it false or true? true True. 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 Yes. Next is Prithvi. True. All kinds of plastids have pigments. False. False. Which one doesn't have? किसके पास नहीं होता pigment? Animals. Chromoplast. No, no, no. नहीं नहीं. Parth, it's plastic. Plastid. Last वाला जो था L. Chromoplast. No, chromoplast. तो they have pigments. The last one L से जो start होता है. Chromatid. No, chromatid. They are in nucleus. Lysosome. Lysosome. अरे 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 आप तो सारी organelles बताने लगे. I'm saying it's a Lipid. plastid. true है No, it's leucoplast. Leucoplast. Yes. Chalo. Now, Parth, you tell me, nucleolus has a limiting membrane. Is it true or false? False. False. Okay. Okay. Now, Bhavya, outer and inner membranes of a chloroplast have chlorophyll pigment. true True. Yes. Prithvi, now it's your turn. Ribosomes are made up of deoxyribonucleic acid and proteins. True. Is it true? false Yes, ma'am. DNA. No, it's RNA ना. Ribosomes लिखा है इसमें. Ribosomes थोड़े ना बने होते हैं. Ribosomes are DNA and proteins. हम RNA and protein DNA नहीं होता बेटा उसमें. DNA तो आपके न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होता है सिर्फ. ठीक है? हमारे पास RNA Yes. It's written DNA ना over here. Now, Ashi, the oxidation of food takes place in a cell takes place in mitochondria. False. False, yeah, true. And false. Yes. Anybody else? नहीं, it will be true statement क्योंकि जो mitochondria है बेटा, it is producing energy और वो energy oxidation of food से ही होती है. ठीक है? Now, Anshu, plastids are called kitchen of a plant cell. False. 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 And which one is called the kitchen? Kitchen होता कौन सा है cell का? Anybody can tell me? Parth, you tell me. Kitchen of a plant cell.
Chloroplast. Yes, very good. It's chloroplast. Now, Prithvi, cell wall of a plant cell is a living substructure. Is it a living structure? False. False. Yes, very good. Now, cork comes from bark. No. Cork comes from bark. True. True. Yes, true. Good. Anshu, Robert Brown discovered protoplasm in 1831. ब्राउन ने डिस्कवर किया था बेटा. True. उसने न्यूक्लियस नहीं किया था. प्रोटोप्लाज्म तो किसी और ने किया था. ब्राउन ने तो न्यूक्लियस किया था बेटा. ओके, नेक्स्ट. Then I am going to ask with Ashi. You tell me, cell forming body of amoeba has an ever changing shape. Yes. Yes, true. Now, Prithvi, you tell me, beta. Movement of a substance from an area of low concentration to an area of high concentration is called diffusion. True. Low to high. No, ma'am. Low to high, ni high to low. False. I am saying low to high. Okay, our statement False. is saying yes, so it will be false. Now, Bhavya, you tell me, beta. A dilute solution is called hypertonic solution. True. Yes, बेटा. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे भव्य. Yes, who else can answer me? Anshu? True है. Next slide. No, it will be false बेटा. डाइल्यूट मतलब उसमें सॉल्वेंट ज्यादा है, सोल्यूट कम है. हाइपरटोनिसिटी नहीं हो सकती. इट इज हाइपोटोनिक मतलब सोल्यूट की कंसंट्रेशन इज लेस. ओके, नेक्स्ट. Lysosomes keep the cells clean by digesting foreign materials and worn out cell organelles. Anshu? Yes, beta. Lysosomes keep the cells clean by digesting foreign materials and worn out cell organelles. False. No, False. no beta, it's true. Digest करता है ना, digestive enzymes होते हैं उसके पास. True. Yes, it is true. Parth, now it's your True. turn. Smooth endoplasmic reticulum Okay. detoxifies many poisons and drugs. False. No, it's true, beta. True. True. Yes, true है. Next, beta, Ashi. Central vacuole occupies 10 to 20% of the plant cell volume. True. False. False. It has, I think, वो ज़्यादा करता है, 78%. right? Yes. 78%. हाँ, बिल्कुल. So now you have finished the true false. Very good. Now we will do fill-ups. Okay, beta? Full यहाँ पे दिया है. Okay. Now the first. Yes, Anshu. The dash are an exception to cell theory. Cell theory के लिए क्या चीज exception है बेटा? Viruses. Okay. Next, beta. The nuclear region of viruses, beta. Next question is the nuclear region of prokaryotic cells is called. Nucleolus. Yes, nucleolus. Very good. The term protoplasm was coined by Parth. Nucleoid. Anji? Shilon and No, Sheldon. No. That was cell theory. LC भी होता है. LC. नहीं, it starts with P only. It starts with P. It's Purkinje. Okay? It's Purkinje who coined the term protoplasm. Okay? Now, the next. Parth, आप बताना बेटा. Ultrastructure of cell organelles can be studied by. किससे पढ़ सकते हो बेटा? Compound microscope. Okay? Compound. Okay. Now, Yes, ma'am. Ashi. An ostrich egg is the dash animal cell.
Is it largest or smallest? Largest. Largest. Largest, ma'am. Yes, good. Anshu, amoeba can change their dash continuously. Shape or size? A. Shape, yes. Shape. Yes, Bhavya. Cell is the basic dash and dash unit of all living organisms. Fundamental and Basic structural. or fundamental. Basic structural and functional unit of all living organisms. Yes. Next, beta. Cellular organelles are often referred to as suicidal bags. Lysosomes. Lysosomes. Very good. Okay. Ribosomes are concerned with the synthesis of Protein synthesis. protein synthesis. Very good. Next, beta. Who will tell me now? I think Energy production. no, no. Prithvi, give chance to everyone, right? Now, I think Anshu will answer me. Otherwise, I won't be able to know who is getting up and who is not getting, right? Okay. Chromosomes are made up of nucleic acid and chromosomes में क्या होता है बेटा? एक तो nucleic acid और DNA. yes, DNA. I'm not getting. DNA. न्यूक्लिक एसिड आ गया बेटा. डीएनए मतलब न्यूक्लिक एसिड. RNA. नहीं बच्चे, वो RNA. मेरा बेटा वो न्यूक्लिक एसिड में कवर हो गया. न्यूक्लिक एसिड इज योर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और इट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड. इसके अलावा क्या चीज होती है? Genes. हाँ जी. Genes. नो जीन्स आर बेसिकली क्रोमोसोम्स ओनली. क्या होगा? क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स एंड यस प्रोटीन. आप ही बताओ, टाइम चलेगा. प्रोटीन. ये ठीक है भव्य मैम, आप बता दो, काम खत्म होएगा जल्दी जल्दी, राइट? इट इज प्रोटीन. ओके. सेल थ्योरी वाज फर्स्ट गिवन बाय डैश एंड डैश. हाँ, शेल्डन एंड शिवॉन. नेक्स्ट इज योर द एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर इन प्लांट्स प्रेजेंट आउटसाइड सेल वॉल. नेक्स्ट भी आप बता सकते हो. सेल वॉल इज प्रेजेंट ओनली इन डैश सेल्स. Plant cell. प्लांट सेल. ये पृथ्वी आप बताना मुझे. माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टे फॉर्म अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर डैश जनरेशन रिएक्शन. Energy. Yes, energy. Good. Parth. Plant cell wall is mainly composed of किस चीज का बना होता है बेटा? Cellulose. Yes, cellulose. Good. Cell organelles perform dash function in all organisms. Basic. Okay. Basic. Cell theory was refined by किसने उसमें? Robert Brown. No. Robert Brown. ब्राउन नहीं है वो, एक और है बंदा. वी से स्टार्ट होता है. Yes, ma'am. डॉल्फ विर्चो. ओके. उसी ने कहा था कि जो न्यू सेल्स हैं दे अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ओनली. ठीक है. रुडोल्फ विर्चो. यस. ओके बेटा. ओके. द लास्ट इज सेल्स वर डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1687. 18 18. हाँ जी. 1678. नहीं 1665 है. ओके. चलो 1865. हाँ जी. ठीक है जी. अब देखो बेटा, अब मैचिंग है. अब दिस आई विल लेट यू नो. रॉबर्ट हुक, व्हाट ही डिड, he That term cell. Yes, good. Cell. Next, Robert Brown, he gave us nucleus. Anshu and Ashi, you can also participate, beta. Okay. Nucleus. Sheldon and Siobhan, cell theory. Cell theory. Yes. Cell theory. Yes, cellulose. अभी हम ये one mole को छोड़ देते हैं. What is cellulose? Cell wall. Cell wall. Cell wall. कहाँ है cell wall? There? No, it's not there. Cell sap. Cellulose. Ma'am, cell sap है. नो बच्चा, सेल सैप नहीं आएगा. तो वी विल कीप इट फॉर. यहाँ पे प्लांट सेल है. नो, देयर इज नो प्लांट सेल आल्सो.
हम लास्ट में मिलेंगे जो बचा देंगे हाँ प्रोटोप्लाज्म, तो वी विल कीप इट एज आवर बेटर मतलब सेफ ऑप्शन. ग्लाइकोजन, इट इज स्टोरेज. ग्लूकोज सिंथेसिस यस है यहाँ पे. हाँ ग्लूकोज ना, ग्लूकोज सिंथेसिस नहीं होता बेटा. माइटोकॉन्ड्रिया, mitochondria beta, it's double membrane. Okay, chromosomes, they are glucose synthesis. Sorry, not chromosomes, they are chloroplast. Okay, chromosomes क्या होंगे बेटा? They are DNA plus histones. ये रहा सेल वॉल का आ गया सेलुलोज. ओहो मैंने सेम कलर से ही कर दिया आपका. सेंट्रल वैक्यूल बेटा स्टोरेज या फिर Storage. inheritance is done by chromatin. Okay. Chromatin. नाउ अभी बहुत सारी चीजें हमारी वी आर नॉट करेक्ट, लाइक जैसे यस बेटा ये जो माइटोकॉन्ड्रिया था, यस बेटा जो माइटोकॉन्ड्रिया था वी कैन से टू बी एनर्जी. ओके नाउ हमें एक चीज में 2 बार चीजें भी आएंगी. अब वो मैंने कैंसिल कर दिया बेटा. 5 o'clock class है. Okay beta, I'm just about to wind up. So what we will do,